Hello everyone, my name is Aarti and you're watching HW News. It is just April, but the rising temperatures induced by global warming are at unprecedented levels already. The heat this year is breaking all the previous records. The soaring mercury is making it impossible to step out of the house after 10 a.m. in the morning. According to the Weather Department, India recorded the hottest March this year in the last 122 years. The last time India witnessed March as hot as this, it was 1901. If March was hottest and driest, April was sizzling. But if you think the month of May will bring any respite, you are in for some bad news. Currently, India is experiencing severe heat wave in many parts of the country and they are only going to get worse. The Indian Meteorological Department has noted that the heat wave conditions are all set to return in the central and northwestern region of India this week. The temperature during the daytime in places like Gujarat, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Punjab, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar and Odisha is set to rise gradually by 2 to 3 degrees Celsius and would prevail till April 28th. The maximum temperature will range between 40 to 42 degrees Celsius during the weekend and the heat has already set in over Kutch-Saurashtra region. On Sunday, some of the country's hottest areas were in the northwest region. The maximum temperature recorded in Barmer, Rajasthan was 42.7 degrees Celsius, Kanpur in UP was 42.6 degrees Celsius, Banda in Uttar Pradesh was 44 degrees Celsius, while Gurgaon and Delhi recorded 41.4 degrees Celsius temperature each. In Delhi, the mercury is likely to touch the 44-degree mark by Thursday. Delhi has also recorded 8 heat wave days in April this year, which is the maximum since the 11 such days that were witnessed in this particular month in year 2010. Now, as I said, in such a heat, it has become difficult for people to work outside. However, those whose 2 square meal depends upon the daily wages are finding it difficult to cope with the extreme weather conditions. Here is what they are saying. बहुत दिक्कत हो रही है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और काम करना बहुत ही मुश्किल है इस टाइम पर। कितने सालों से? मैं तो दिल्ली में तो आता जाता रहता हूँ, वैसे एक्चुअली सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। कभी भी इतनी गर्मी देखने को मिली? मुझे 20-25 साल से तो मुझे याद आता है कि मुझे इतनी गर्मी कभी नहीं दिखी। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करना है? गर्मी से बचने के लिए मैं तो अपना ध्यान देता हूँ कि लिक्विड इनटेक पर, खाना कम खाना है, लिक्विड ज़्यादा लेना और नींबू, इस तरह की चीज़ें, आंवला, नींबू, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। दिक्कत तो हो रहा है जी, एक तो लू इतनी चल रही है, सिर में दर्द होती है, चक्कर आते हैं और लोगों को लूज मोशन और गर्मी के कारण ही पेट दर्द की शिकायतें बहुत हो रही है। हम ऑटो वालों को तो खासकर गर्मी में सारा दिन हमने ऑटो चलानी है। अब छाया के नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं, अब शाम को काम करेंगे तो इस गर्मी में हम सवारी पैसेंजर भी नहीं बिठा के जा रहे, हमारे को चक्कर आ रहे हैं। इस गर्मी में पैसेंजर नहीं बिठाते तो नुकसान नहीं हो रहा? नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या करें, अभी किसी को कस्टमर को लेकर जाते हैं, हमें रास्ते में कुछ चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए, हम गिर जाएं तो क्या कमा लेंगे, शाम को कमा लेते हैं हम, धूप में हम काम नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब सुबह और शाम को कमाई करते हैं, दोपहर को हम आराम कर रहे हैं इसमें गर्मी की वजह से। गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही टेम्परेचर। पहले कभी देखा था अप्रैल के महीने? नहीं, मैंने ना मई जून में होती थी इतनी, ये पहली बार हुआ। अप्रैल के मार्च से शुरू हो चुकी थी ये गर्मी तो, और आगे जब मई जून का महीना आएगा तो हमारे को तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। हमें क्या, आप दिल्ली का जितना मजदूर है, जो मजदूरी करता है, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे ऑटो चालक हो या बेलदार हो, कोई भी, उनको जून के महीने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो हमारी तो यही है भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं गाड़ी चलाता हूँ। इस बार जो दिल्ली में गर्मी पड़ रही है उससे आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? बस बहुत दिक्कत हो रही है जी, तो गर्मी से घनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। एसी भी काम नहीं कर रहे गाड़ी के, और सवारी बैठते ही एसी तो 3 पॉइंट पे भी काम नहीं कर रहा एसी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? बचने के लिए यहाँ पे कुछ जगह ही नहीं है, पेड़ भी नहीं है इतने, और कहीं गाड़ी कोई खड़ी भी नहीं होने देता पुलिस वाले, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दिल्ली में। देखा था किसी कभी? नहीं, पहले कभी नहीं, इस महीने में तो नहीं देखी, अब से पहले तो नहीं देखी थी। सवेरे जो होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उस टाइम ठंडा होता है टाइम। दोपहर में फिर हम गाड़ी नहीं चलाते और फिर शाम को 5 बजे के बाद फिर गाड़ी चलाते हैं। इस टाइम हम गर्मी के कारण हम नहीं चलाते। गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखो, अब ये गमछा पहन रखा है और यही है बस, और क्या है गर्मी के लिए, और तो इससे ज़्यादा तो और कुछ होएगा ना बचाव। वह गर्मियों के दिन तो आ जाती है, लू इतनी चलती है, लेकिन अब की बारी तो बहुत ज़्यादा ही है गर्मी।
इससे घबराहट होती है, दिल करता है ठंडा पानी पिए, बस जाता है यही है, लस्सी पिए या नींबू पानी पिए, ये दिल करता है पीने को। गर्मी में तो बहुत दिक्कतें बढ़ रही हैं मैडम जी, इससे बीमारियाँ भी बढ़ सकती हैं, प्रदूषण की वजह से ये हो रहा है। अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी देखा था कभी? कभी नहीं देखा, इतने साल से रहता, 15 साल से आ रहे हैं हम लोग तो मैडम जी, बाहर ही का काम है, सब यहीं का है। किस तरह से बचाव करते हैं अपना? अब कैसे क्या, यही धूप खाना है, गर्मी झेलना है, सब कुछ करना है, कारोबार है तो क्या क्या, धूप छाई कहाँ रखी है, एसी कहाँ रखी है। आज से पहले तो हमने कभी देखा ही नहीं, मार्च अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी, मई जून में जा कर के इतनी गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस साल तो बहुत ही बुरा हाल है लोगों का। और जो बेचारे जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जिनके पास घर में पंखे कूलर तक नहीं है, वो लोग कैसे गुजारा करेंगे, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, तो मौसम है, तो फिर भी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, सड़क पे जैसे पानी का हो, ठंडे पानी का, रास्ते में कुछ प्याऊ वगैरह इस टाइप का लगाएं, तो जिससे कि आने जाने वालों को प्यास बुझ सके और उनसे कुछ राहत मिले गर्मी से। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पानी पिए, छाँव में रहे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा घर से। Now, usually topics like climate change and weather conditions are overlooked or are missing from the prime time news coverage or get very less coverage. But as much as any other development, political or financial, it is important to pay attention to the changing weather conditions. Now, while this year might have felt the hottest ever, summer temperatures have been rising across India in the past few decades. This is visible in the number of heat wave days the country experiences in summer months between April and June. According to a Met Department study, the heat wave days in India are increasing at a very rapid pace every decade. From 413 between 1981 to 1990 to 575 between 2001 and 2010 and 600 between 2011 and 2020, the number of days that see extremely hot days is persistently increasing at 103 weather stations across India. The study shows it is happening mostly in the inland areas. But what exactly is a heat wave? Let us find out. Simply put, when the mercury rises above the average temperature and it persists throughout a couple of days and you feel it, that is when you can call it a heat wave. You feel the air is hotter than the normal, the sun is more intense, but there is a method to tell whether it is a heat wave or not. According to IMD, the heat wave is when the maximum difference in temperature is between 4.5 and 6 degrees Celsius. For example, if a locality's typical temperature is 40 degrees and the actual documented temperature for that particular day is 45 degrees Celsius, then this area is experiencing a heat wave. Similarly, a severe heat wave is proclaimed when the maximum temperature recorded in a location deviates from normal by more than 6.4 degrees. For different terrains, heat wave considerations also vary. It is considered to be a heat wave if the highest temperature in an area or a location hits or surpasses 40 degrees Celsius in the plains. For hilly areas, it is 30 degrees Celsius. The highest temperature criterion for the coastal zones is 37 degrees. Apart from that, if the temperature in a given location exceeds 45 degrees or 47 degrees on any given day, the IMD declares a heat wave or a severe heat wave accordingly. Heat waves are very common in India from March to June, with a few exceptions in the month of July as well. The month of May has been recognized as having the most extreme heat waves. However, this year, the heat waves have already started from the month of March. Now, how is heat wave exactly affecting India? Heat waves in India are increasing in duration and are expected to be 3 to 4 times more common in the future. The impact of the heat waves are also uneven. According to IMD data, this year Rajasthan and Madhya Pradesh were the most affected states due to heat wave, followed by Himachal Pradesh. While Rajasthan and MP recorded 25 heat wave days, Himachal Pradesh recorded 21. Now let us talk about the La Nina effect. La Nina is an oceanic and atmospheric phenomenon in eastern and central Pacific Ocean that happens during winters in India.
However, this year it has persisted a little bit longer than expected and interacted with the warm waves coming in from rapidly warming Arctic region, which is leading to a heat wave in India. Now, heat-related deaths are a prevalent occurrences in India as well. According to a study published in the Lancet Planetary Health, almost 7,40,000 Indians die each year. Mind you, 7,40,000 Indians die each year as a result of climate change-related temperature fluctuations, both hot and cold. Heat waves in 2010 alone killed more than 1,300 people in the city of Ahmedabad, prompting the start of efforts to develop coordinated heat action plans. Now, there are various reasons for such heat waves, primary being the climate change. In the first installment of the 6th assessment report, the IPCC asserted that human activities have warmed the planet at a rate never seen before in the planet's long history, and the Earth's global surface temperature has warmed by 1.09 degrees Celsius compared to the pre-industrial period of 1850 and 1900. Human influence is the main driver of hot weather extremes, which have also become more frequent and intense since 1950s. So, since the heat wave is going on, please do take care of yourself. Do not venture outside after 10 o'clock in the morning, if at all it is not necessary. That is what we can tell you to save yourself from heat wave. Also, keep on drinking more and more liquid, take more liquid intake, and do keep with yourself foods or juices that can keep you hydrated. Thank you so much for watching this. Do let us know what you think about this in the comment box below. For more news and updates, you can log on to www.hwnews.in.